Good afternoon, everyone. I, Sonal Goel, the president of NISHTA, the Civil Services Society of Hansraj College, extend my hearty welcome to our honorable and renowned chief guest speaker, IAS Sonal Goel ma'am, respected principal, Dr. Rama ma'am, our esteemed convener, Dr. Mahendra Prajapati sir, and the amicable audience for gracing and adding luster to the opening session of our 3 days flagship event for the academic session 2021-2022, lovingly named Uddesh, with their radiant and cheerful presence. Nishtha, an innovative and one-of-a-kind society of Hansraj College, is acclaimed to provide a vibrant platform for fervent civil services aspirants to converge and converse. Treasuring the motto of Nishtha Dhriti Satyam, the society is a paragon of values of dedication, steadfastness, and truth. Since its inception in 2017, the society has bagged profuse honors from different at different stages from renowned organizations and personalities under the mentorship and guidance of Professor Dr. Rama. I feel profusely elated to welcome our distinguished principal, and I request her to kindly inaugurate the session with her words of wisdom and encouragement. Over to you, Rama, ma'am. Ma'am, ma'am, am I audible to you, Rama, ma'am? Please turn on your mic and camera, ma'am. You're not audible and visible. Yes, ma'am, you're visible now. Thank you. Welcome. Thank you, Sanil. Thank you. Thank you very much. Namaskar. Nishtha Society, Student President, Sanil Sengar. टीचर कन्वीनर डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, हमारी आज की जो चीफ गेस्ट आईएएस सोनल गोयल जी हमारे साथ हैं। आईएएस सोनल, मैं आपका हंसराज कॉलेज के बिहाफ पर स्पेशल वेलकम करती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो निष्ठा सोसाइटी है हमारी, जिस तरह से धृति और सत्य की जो बात सानिल कर रहे थे सोनल, दरअसल ये इन स्टूडेंट्स की क्रिएशन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो हंसराज कॉलेज जो लगभग 75 साल की अपनी यात्रा पूरी कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में 75 साल में यदि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस प्रोड्यूस किए हैं तो हंसराज कॉलेज। उसी को देखते हुए ये स्टूडेंट्स ने कोशिश शुरू की कि क्यों ना हम पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि अगर आईएएस बनना है तो पूरी निष्ठा, वैसे तो हर फील्ड के लिए निष्ठा चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए जिस डेडिकेशन की, जिस एकदम कहना चाहिए एकदम फोकस्ड हमारा टारगेट होना चाहिए, कोई विदाउट एनी इफ बट, किंतु परंतु कुछ नहीं, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसके बाद जिस डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स ने मिलकर डॉक्टर महेंद्र प्रजापति के साथ इस सोसाइटी की शुरुआत की है और हमारा ये मानना है कि जो इस सोसाइटी से एक साथ जुड़ जाता है वह हंसराज कॉलेज का फैमिली मेंबर बन जाता है। तो मैडम सोनल गोयल आज से हमारी फैमिली मेंबर बन गई हैं। अपने इस नए फैमिली मेंबर का हम स्पेशल वेलकम करते हैं। जब मैं देख रही थी हमारे साथ स्क्रीन पे 208 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और ये जो निष्ठा का प्रोग्राम है, पूरी निष्ठा सोसाइटी को, सानिल, में आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये कोविड के सर्कमस्टांसेस में फिजिकली ना सही तो आप लोगों ने वर्चुअल मोड पर इस तरह का आप लोगों ने जो एक टॉक का सेशन रखा है और आपने ये जो यंग आईएएस हमारे स्पीकर्स बुलाए हैं, हम सब जरूर इससे हमारे लिए एक अच्छा सेशन जाएगा। आप लोग इस तरह का सेशन करते रहें। स्पीकर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे क्योंकि इनका जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन के साथ साथ अपनी एक आगे की यंग जनरेशन तैयार करना, मैंने देखा है कि ये लोग खूब अच्छे से हेल्प करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही कॉलेज फिजिकली मोड में खुलता है तो मैडम सोनल गोयल को हम जरूर कॉलेज में बुलाएंगे। कॉलेज में बुलाकर कॉलेज के साथ जोड़ते हुए हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका एक बार पुनः वेलकम करते हुए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. It is indeed an honor for us to have you amongst us at this juncture of at the starting of our flagship event. So on this note, now I feel exuberantly joyful to announce that to expatiate on the topic, heralding change and impacting lives through bureaucracy, we have with us a person who believes that we all can contribute to the society in all capacities, big or small, IAS Sonal Goel ma'am, who is currently posted as Special Resident Commissioner at Tripura Bhavan in New Delhi. Having secured an All India rank of 13th in the Civil Services examination, she joined Tripura cadre and has held various significant positions since then. In September 2016, she was featured in the top 25 women transforming India by Niti Aayog, United Nations, and my government. Notably, she has also been appointed as the honorary advisor at BRICS CCI Young Leaders Forum for the session 2020-2023. I wholeheartedly welcome you, ma'am, on behalf of Nishtha and Hansraj family, and request you to kindly take over the forum and initiate your address. Thank you, and over to you, ma'am. Ma'am, you are on mute at the moment. Yes. Thank you so much. Namaste, good afternoon. My dear students of Hansraj College, Principal Ma'am, all professors and faculty members who are present today, and this very auspicious occasion on which the Hansraj College Society Nishtha has organized this webinar. I am very happy to see young students who are the young leaders taking these kind of initiatives of sharing positive information, sharing positive stories. Uh, Principal ma'am was mentioning that I am a part of Hansraj College. Yes, of course, I am a part of Delhi University because just to mention, I did my graduation in 2003 from Shri Ram College of Commerce. I did my BCom honors from SRCC, and after that, I also did my law from Delhi University itself. So I am very much a part of Delhi University, and there have been number of occasions wherein I have had the opportunity of visiting Hansraj College, not for so as to say giving any lecture in person, but yes, of course, when I was doing my graduation and even post graduation, so to meet the young friends and of course to attend some events, some inter college competitions and some of the events, festivals at those times very frequently were being organized. So हंसराज कॉलेज में हमने बहुत बहुत काफ़ी बार मैं आई, और आज आप सबसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. The topic which we have chosen, which the society has chosen today, is heralding change and impacting lives through bureaucracy. So, friends, I generally like to इंटरेक्ट मोर विद द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि उनका सेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, कुछ वो मेरे बारे में जानना चाहेंगे, कुछ उनका एप्रीहेंशंस क्वेरीज होगा. सो माय इनिशियल रिमार्क्स वुड बी वेरी ब्रीफ. आई वोंट बी डेलिंग मच इनटू द टॉपिक पर से, बट आई वुड लाइक इट टू बी मोर इंटरेक्टिव. तो मेरा 10 से 12 मिनट में इनिशियली बोलूँगी, उसके बाद That's जो good. भी क्वेश्चन है, जो भी आपके That's good, क्वेश्चन हैं, Sonal. जो क्वेरीज हैं, थैंक यू मैम, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी तक का, उसको मैं उसका अपना एक्सपीरियंसेस और अपने व्यू पॉइंट शेयर करना चाहूँगी. So when we talk about the bureaucracy impacting lives of the people in the country and bureaucracy heralding change, I have always believed, in fact, I would like to share my journey herein, that how I came into civil services. जैसे मैंने mention किया, I was doing my graduation from Shri Ram College of Commerce. So I would like to take you back, take you all of you back to 2003, wherein I was doing my uh, commerce graduation from Shri Ram College, and also I was doing my CS. So it was in my third year of graduation, friends, when I came across civil services. And frankly, in my family, nobody had ever attempted to appear in civil services. I belong to a middle class family based in Panipat district, Haryana, and it is a predominantly a business class family. But my father was a chartered accountant, and he had his own practice established at Delhi. So because of the reason, we had shifted to Delhi, and I was doing all my studies in Delhi. So जब मेरे को ये जब मुझे इसके बारे में पता लगा, तो I discussed this with my parents, my family. तो there were lot of apprehensions initially because I was already doing CS. So मेरे mind में ये एक वे path था कि I would join private sector. I have an elder sister who was at that time doing CA. So both the sisters had
almost thought of that we would be joining private sector, and my father was doing his CA practice. But then when I came across civil services, I read about it in magazines. Then I inquired more about this. I met few of the uh, कोचिंग इंस्टीट्यूट पीपल, नॉट मैनी, 2 or 3, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे करते हैं तैयारी. So all those apprehensions came in the mind of my parents, especially my father. Firstly, civil services is even till date it is the most toughest examination. Selection is not sure. Even after you spend your 2 to 3 years, it is not confirmed that you will get selected. And even after selection, what rank you will get, after rank, which service you will get, after service, which cadre you will get, and then after you get any cadre which is not closely located to your home place, then how do you settle your family? Of course, you have to get married. You'll have your own family life. So all these apprehensions came into the mind of my parents. So initial 5-6 months they did not agree, but then when I kept on persisting, I kept on requesting to my parents. My father said, "Okay, अगर आपको करना है आप कीजिए, but you should have a plan B, backup plan in your mind that if you don't clear civil services, तो आप क्या करोगे?" Because he had always supported the cause of education, and he always was saying the thing that especially the females should be economically independent, especially the girls should be financially independent. This was the thing which my father had always said. So then I took his advice. मैंने 2003 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. 2004 में मेरा CS कंप्लीट हुआ. At that time doing CS along with graduation was allowed. I had completed my CS, and in the year 2004 I appeared for LLB entrance examination. I got admission into this faculty of law, Delhi University. I started my law. In the same year, I started my preparation for civil services, and I also took up a job on a part-time basis as company secretary. 2004 to 2007, these three things were parallel in my life. Focus was, of course, on civil services preparation. I was supposed to attend the regular classes of law at Delhi University, and also I was doing my part-time job as company secretary to gain that experience, and also, frankly, to earn some money to finance my own studies to an extent, if not fully, then at least to an extent. So all these things were moving on parallelly, and 2006 I appeared my civil services first attempt. I wrote mains, but unfortunately I did not get my interview call. So of course I was very much demotivated. इतना घर से परिवार से लड़ाई करके मैंने डिसीजन लिया, और अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूँगी तो दिस वुड बी अ थिंग which I should not be having a grudge upon कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. तो when I recollected my strength, I kind of मैंने अपने फेलियर्स कहाँ पे हुए, क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स रही, उनको देखा, उनको समझा, एंड देन आई took it a note to my own self. I make it a point to my own self that in the second attempt, my strategy would be that मेरा 100% से ज़्यादा भी अगर मैं दे पाऊँ तो मुझे देना है, सो दैट आई शुड नॉट बी हैविंग एनी रिपेंटेंस दैट मैंने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट का मौका मिलेगा या नहीं. फ्रेंकली आई वॉज नॉट श्योर, बिकॉज हरियाणा में आज भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में इल्स हैं, इविल्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग वे बैक अराउंड 2006-07, मोर देन 13-14 ईयर्स. तो उस टाइम भी मुझे क्लियर नहीं था मुझे थर्ड अटेम्प्ट देने का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मेरे अंदर खुद में भी इतनी एनर्जी रहेगी, इतना पैशन रहेगा कि मैं दोबारा से एग्ज़ाम दूँ. तो आई recollected my all of my strength. I gave my 100%, and by God's grace, support of my parents, I qualified civil services in this 2007 examination. और क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा नेक्स्ट ईयर आता है आफ्टर वी फेस इंटरव्यू, so my batch is 2008 and I could clear with my all India rank 13th. And frankly at that time I was already a CS. I had completed my LLB, so I was commerce graduate and a CS LLB when I joined civil services. So then September 2009, I joined Masuri Academy for my training. After few months, say in December, we got our cadres. My cadre which was allocated was Manipur Tripura. And after we get Manipur Tripura, they generally allocate a state. So I was allocated state Tripura by DOPT, Department of Personnel and Training.
and I joined state in June 2009 after completion of my training at Lavasna. So when I joined there were a lot of differences which I could experience. Difference in the culture, the language, the way administrative setup was designed, because I had always stayed in the northern part of the country, and I was supposed to work for my entire life, or if not the entire life, the major part of my life in in a very beautiful state. Tripura is very beautiful. People are very warm. People respect the officers a lot, and it's a very peace loving state. Tripura does not have the other law and order or insurgency issues like other northeastern states have had at that time. Right now, so in fact, most of the northeastern states are now very balanced, and they have progressed a lot as far as the law and order situation is concerned. So I took it as a challenge, and I started my training there. Then after training, I was posted as SDM in Ambassa. Then from 2009 to 2016 July, I worked in Tripura in various capacities. I was always in field, and from SDM ship to ADM and collector. I was also CEO of the Agartala Municipal Corporation. After that, I joined Labor Department, Sarv Shiksha Abhiyan, and then I was posted as DM and collector, District Gomti. And then after that, in 2016, I came to Haryana on intercadet deputation. I served the state of Haryana for 4 years, and in Haryana also my postings were in field. So all these years of 13 years, in fact, yesterday I had uh, we our batch had completed 13 years in the service. First September 2008 we had joined service, so yesterday only we completed my batch completed 13 years. So they all these years have been full of insights, full of experiences, lot of learnings, change in the personality, change at how we look at things, a change at how I was oriented when I joined the service and how I am today. If I see all these year backs, there have been lot of changes, and many things we could do, many things we could not do, because friends, आपका जो ये society है which is primarily aiming about civil services preparation. So whenever I talk about any lecture on civil services preparation herein, आज तो मैं उतना डिटेल में सिविल सर्विस प्रिपरेशन के बारे में नहीं बोल पाऊंगी, but one thing I would just like to mention to everybody, that whenever you are trying to स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, जब भी आपके माइंड में आपने सोचा है कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट एंड वेरी फॉरमोस्ट एंड द बेसिक थिंग इज कि द गोल ऑफ वाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, ये गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में. सो वाई इज इट दैट यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज? इज इट द रिस्पेक्ट और द कैरिस्मा इट्स होल्ड्स इन द सोसाइटी, और फॉर दैट मैटर एक अपॉर्चुनिटी जो देता है लोगों से कनेक्ट होने के लिए, या आपकी यंग एज में इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्किंग इन फील्ड, ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, या क्या और रीज़न है जिसके लिए आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं. ये रीज़न आपके माइंड में इसलिए क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन के टाइम भी डीमोटिवेटेड होंगे, ये जो आपका एक गोल है ये ही आपको मोटिवेट करता रहेगा, ये आपको ड्राइव करेगा कि क्यों आपको तैयारी करती रहनी चाहिए. और दूसरी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में प्लान भी हमेशा होना चाहिए. दीज टू थिंग्स आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स टू टेक केयर ऑफ, कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करोगे. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट टू डीमोटिवेट एनीबडी, एवरीबडी हैज़ अ कैलिबर, सब लोग बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड है. बट अगर 10 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो कंपटीशन में फिल्टर्स हैं. देर आर वेरियस नंबर ऑफ फिल्टर्स. प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है, वो कुछ थाउजेंड्स में रह जाते हैं, 10-11 हज़ार का रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर मेंस में आते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन तो आपको पता है फ्यू हंड्रेड्स में जो लिस्ट आती है. तो ये जो एक एग्जामिनेशन है, आप इसके अंदर अपना यूथ का प्राइम इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 से 3 साल कम से कम इन्वेस्ट कर रहे हो. So when you are investing this much of time, you are also simultaneously learning so many things. It is also a learning for your own self. It is learning about the general knowledge about history, geography, polity of our country, various other aspects like national issues, current
इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज। तो ये जो नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो और प्लस जो अपना प्राइम यूथ का टाइम जो लगा रहे हो, इसको वेस्ट नहीं करना है। हाउ डू यू यूज दिस नॉलेज, हाउ डू यू यूज दिस एक्सपीरियंस, और फॉर दैट मैटर अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर मे बी एन नंबर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। ऑफकोर्स डिफ़िकल्टीज़ होंगी उसको शिफ्ट करने में, क्योंकि हम बहुत आशा से, बहुत एस्पिरेशन से, बहुत ही जज्बे और जुनून से इस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करते हैं। तैयारी जब भी स्टार्ट करते हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो सब कुछ अपना लगाता है, चाहे 15 से 16 घंटे पढ़ाई की बात हो, चाहे सोशल ओकेजन्स अटेंड ना करने की बात हो, चाहे आपको रिलेटिव्स कुछ भी बोलें कि वो सेल्फिश है। मुझे भी बोलते थे कि शी इज़ सो सेल्फिश। मेरे घर में भी अगर रिलेटिव्स आते थे फेस्टिवल्स में, तो माई स्टडी प्रिपरेशन रूम वॉज एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस, तो मैं उसको लॉक कर लेती थी अंदर से, सो दैट नोबडी इज़ कमिंग अप, एंड आई इवन इफ दे आर कमिंग अप आई वुड नॉट बी मीटिंग, बिकॉज मेरे लिए हर आधा घंटा इंपॉर्टेंट था। तो पीपल वुड बी टेलिंग यू एन नंबर ऑफ थिंग्स, यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट उस टाइम पे क्या है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एट दैट मोमेंट टू डू। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आपके जो इमीडिएट क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं या ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी मेंटरिंग करते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, उनसे भी टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस प्रिपरेशन स्पैन इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड एवरीबडी टेंड्स टू गेट डिमोटिवेटेड, एवरीबडी टेंड्स टू गेट सम मूड स्विंग्स अप एंड डाउन। तो उस टाइम में आपको खुद को, अपने आप को रिकलेक्ट करके रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। और अगर ऐसी कोई भी परेशानी आती है, उससे डिप्रेशन में नहीं जाना है। फ्रेंड्स, किसी ने भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है ईजीली किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया है। एवरीबडी हैज़ हिज और हर ओन स्ट्रगल, हिज और हर ओन लाइफ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं फिर त्रिपुरा मैंने ज्वाइन किया, वहाँ काम करना इजी नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह माना। माय हस्बैंड वाज ऑलवेज पोस्टेड इन दिल्ली, दिस पार्ट आई हैड ऑलवेज स्टेड एट लीस्ट टिल more than 7 years we say I stayed separately from my spouse। और फिर मेरी डॉटर हुई, उसके साथ 2013 में उसके साथ मैं वहाँ रही। क्योंकि आपने देश सेवा के लिए ये नौकरी को चुन रहे हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे टेस्ट लेगी आपसे, और उसको माइंड में रखते हुए आपको ये एग्ज़ाम देना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम माय ओन स्टोरी, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ वर्क विच हैज़ बीन डन बाय ब्यूरोक्रेसी, एंड हेयरिन आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन कि जो परसेंटेज ऑफ women in bureaucracy, the percentage of women in bureaucracy has been moving positively। सो एट अ टाइम जब हमने देखा कि जब ICS था, ICS से फिर ये IAS, द इंडियन सिविल सर्विस मूव टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड देन देयर वाज वन लेडी श्रीमती अन्ना मैडम, एंड देन उसके बाद में वी सॉ हाउ women officers came into IPS, and उसके बाद में now we are seeing that how women bureaucrats are manning all important departments। Last year we saw Preeti Sudan ma'am, who was Secretary Health Government of India when the entire nation was reeling under COVID-19 pandemic first wave। We have seen women bureaucrats being posted as DGPs of state, chief secretaries of state। So we are seeing much more representation of women, but it is not even 20%. If we see, this is not even 20% till now, and we need to actually have more women in bureaucracy। And उसका एक reason ये भी है friends कि if you have a balanced gender in every profession, it is not only in bureaucracy, it is in all professions, it is corporate, it is legal, किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इफ़ यू हैव एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, you will have more gender sensitive laws, you will have an overall inclusive gender parity in the society, so which is very important। And when we talk about impacting the lives through bureaucracy, there are n number of stories when we talk about uh, implementation of schemes like in the rural development department, Manrega, the panchayat development department, Jal Shakti mission, Jal Shakti Abhiyan. We have seen the implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Swachh Bharat mission. All these flagship programs and schemes have been made possible to be implemented in a positive way only and only because of the involvement of people in these programs। So when we're talking about
bureaucracy impacting the lives of people, it is very important that they establish that connect with the people, they establish that rapport with the citizens wherever they are working in. और ये जो हमारा G2C और C2G जो गवर्नेंस है, इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के अंदर, so as to remove the middlemen, so as to improve transferability, improve the connectivity and the field level, and all these things are a welcome change. And just to end my initial remarks here, I would just like to end with mentioning the example of COVID-19 pandemic, how humanity has shown its resilience during last year and of course this year 2020 and then 2021, that COVID-19 pandemic had struck everybody's life, but we as humanity, as a team together, we have faced it with resilience, we have shown our strength. And especially if we talk about bureaucracy, so whether it is police administration or it is administration in general, our safai karamchari, of course, our health workers, everybody has tried to give their best effort. And India as a nation could move forward, I think, because of the teamwork which we have displayed. And also, as part of administration, I would also like to extend my sincere thanks to the civil society organizations, to the public spirited individuals, to NGOs who came forward and took the responsibility of helping the society. During COVID-19 pandemic phase 1, it was help in the terms of feeding the migrant workers, feeding the laborers, people living in slums, giving them logistic support. When we saw COVID-19 pandemic wave, second wave, the help which people were giving to each other in terms of the supply of medicines, supply of rations, of course, helping through social media in locating the oxygen concentrators, in providing hospital beds available. So all these things uh, just indicate that we, as part of society, we have a huge responsibility, and bureaucrats are only one part of driving the system. Bureaucracy is one very important part of driving the system, and we have to work in tandem, we have to work in coordination and cooperation of all stakeholders, whether they are the political bosses or media or judiciary, civil society organizations, or for that matter any individual. So a bureaucrat has to work in that entire ecosystem, and we have to balance out things, and we have to just give our best, be true and honest in your effort. And when you are working with that true intention, it is generally seen that people also come to your support, your team members would also support you, and you will always be able to bring that change which you had foreseen. And it is also very important that the change which you are trying to bring in is very sustainable. ऐसा नहीं हो कि आपके ट्रांसफ़र के बाद वो इनिशिएटिव जो है वो बंद हो गया, कागज़ों में बंद रह गया. If you have taken an initiative, it should be the responsibility of the concerned officer as well as the team itself to ensure that the initiative is sustainable even when the officer is transferred. So I think this is very important, not only in bureaucracy but also in any other organization. कहीं पे भी हम कोई अच्छी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करते हैं तो ये सिर्फ उस इंडिविजुअल की ही नहीं, उस टीम की भी जिम्मेवारी है कि उस अच्छी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू रखें. So these were, I think, my initial remarks. If there are any questions, I would like to deliberate on the questions. Thank you so much, and my best wishes to the students of Hansraj College. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was indeed a pleasure to hear on such a topic from you, who have now dedicated more than a decade of your service, to the decade of your life to the service of this country. So, since we have time constraints, I would just go on with some 2 questions or so, which I think the audience really wanted to ask. The first is, what is the most effective way for a bureaucrat to connect with people and make sure that their problems are heard and resolved properly? Sorry, I missed the first part. If I may repeat, what is the most effective way to connect to the people? Yes, Yeah. ma'am. And then, And make sure that their problems are resolved properly. okay.
Friends, when you're talking about connecting with the people and society, a bureaucrat is having n number of mechanisms to be able to take that feedback from the society. So agar hum baat kare digital initiatives, so right now in India, even before the advent of digital India, there were a lot of initiatives. Many state governments had launched under the Right to Service Act. Most of the services were being provided online, like marriage registration, birth certificate, death certificate, your mechanization and computerization of land records. Each state has its own software, and then you actually now the interface which has been made possible between the citizen and the government through digital initiatives, it is phenomenal in the country, and this is only going to improve, because now even government understand that we need to improvise our digital initiatives, and even citizens want that there should be minimum visits to the government offices, minimum visits to the tehsil or block offices, and they should get their services as immediately as possible at their home front. So एक तो ये बात important है. दूसरी बात important क्या है कि when we are talking about connect with the society and people, there is still the traditional system of physical contact. So physical contact through like administrative camps, where a deputy commissioner or an SDM would be, or a deputy collector would be going to the remote areas of the district, of the block, of the taluka, of the panchayat, administrative camp, Janta Darbar, field visits. So all these things are very much important as far as the working in bureaucracy is concerned. और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि हमारा जो सिटीजन से कनेक्ट है, उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. वी हैव आवर ऑनलाइन ग्रीवांसेस सिस्टम, हमारे पास में ईमेल्स भी हैं. ऑफ कोर्स नाउ सोशल मीडिया इज देयर. सोशल मीडिया में पीपल कैन राइट एट ट्विटर, पीपल कैन टैग, जैसे कोई भी specific grievances हो, and most of the organizations now are available on social media, and it sometimes it becomes very much fast forward, in the sense कि within few hours the complaint is being redressed. So this kind of connect, both through physical mechanisms and through digital interventions, this has been a very positive, this has seen a very positive move in our country, and I only see that it should be improvising in coming future. There is no way it should be reducing. Yes, thank you. Yes, thank you, ma'am. But just one last question, and then I maybe can we take, can wrap. okay, I think I can take two more questions, no problem. I can be there, say, till 3:20, because I have to leave after that, Yes, yes. ma'am. Yes, Till ma'am. Sure. 3:20 I can be there. So two more questions you can ask, no problem. Yeah, so ma'am, the other question that I have is that sometimes it is possible that as a bureaucrat, you'll have to function in a way that contradicts your personal ideologies, or rather, you might have to work in a way that the present government expects you to. In that case, how do you try to bring a balance between your responsibility and personal beliefs? Friends, you have to understand that you are an individual, but you are a part of that ecosystem. So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर इन योर माइंड, जो मैंने पहले भी बात बोली कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और आपके अपने प्रिंसिपल्स एंड गोल्स एंड मिशंस क्या हैं. if you are very much clear on that, any such kind of situations जिसकी सनील ने बात करी कि your personal stand or your personal viewpoint would be differing from any senior, or for that matter कि कोई भी हायर लेवल में अगर आपको कुछ करने को बोलेगा जिससे आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, तो मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, सबकी लाइफ में आती हैं. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू वॉट इज टू टेक एन एक्शन विच इज़ लीगली करेक्ट. फ्रेंड्स, जो लीगली आप करेक्ट एक्शन लोगे उसको बाद में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है. बट इफ़ इन हेस्ट ऑफ टाइम यू लिसन टू समबडी एंड यू आर टेकिंग एक्शन जिसका बाद में आपको कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, देन बिलीव मी नोबडी वुड बी देयर टू सपोर्ट यू, नोबडी विल बी एबल टू टेक आउट ऑफ द सिचुएशन. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लीगली करेक्ट हो, और साथ ही साथ में आप मॉरली करेक्ट हो, मॉरली जस्टिफाइड हो आप अपने खुद के साथ में कि ये सिचुएशन है, इसका अगर मैं उस साइड में होता या मैं उस साइड में होती
तो मैं ये एक्सपेक्ट करती कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक ऑफिसर हमारे लिए ऐसा डिसीजन ले जो कि लीगली भी करेक्ट हो और मॉरली जस्टिफाइड हो। तो मैं उसी तरीके से अपने एक्शंस को लेने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ऑफिसर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वी गेट ट्रांसफर्ड आउट, सो उसके बियॉन्ड हमें सर्विस से रिमूव करना इज़ नॉट दैट ईजी। यू कैन बी फ्रस्ट्रेटेड विद अस, बट हमारे को जब तक हम रिजिग्नेशन नहीं देते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू, इनफैक्ट देर आर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मैकेनिज्म्स अवेलेबल, बट अगर आप लीगली करेक्ट होंगे तो nobody would be able to do that harm to you. सो माई पॉइंट इज़ कि आपको खुद जस्टिफाइड होना चाहिए, आपको लीगली करेक्ट होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आएंगी। बैलेंस आउट करना है उसमें जो जस्टिफाइड है लोगों के हित में, जो आपको लगता है इट इज़ फॉर गुड फॉर द सिटीजन्स वेलफेयर, यू शुड ऑलवेज टेक दैट डिसीजन। एंड सूनर और लेटर पॉलिटिकल बॉसेस ऑल्सो गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एन ऑफिसर यू आर, एंड देन दे जनरली डू नॉट, एंड हम लोग ये ना सोचें कि हमेशा, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वी शुड नॉट always think that all politicians are having vested interest which is against or which is contrary to the public. ऐसा हम ना सोचें। समटाइम्स कई कम्युनिकेशन गैप भी होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव वन इलेक्शंस, या कोई अगर नॉमिनेट होके भी आए हैं तो उनका पब्लिक स्टेक्स है, ऑफकोर्स पब्लिक स्टेक्स है, उनका अपना स्टेक्स भी है, बट ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि वो हमेशा गलत ही बोलें। Sometimes there is, I have also realized this fact that sometimes there is a communication gap, किसी ने उनको जाके कुछ बोल दिया and they assume it is correct. So as an administrator ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that you have that communication established properly with your major stakeholders, media, judiciary, political, वहाँ पे जो functionaries हैं उनके साथ में, your communication also should be clear. If your communication is clear and loud, ये इस तरीके के कन्फ्यूजन्स भी कम क्रिएट होंगे, एंड यू विल बी एबल टू टेक द पीपल अलॉन्ग इन योर डिसीजन। फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ में सभी साथ में रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसको काम को करने का और ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक वी एज ब्यूरोक्रेट्स ट्राई टू वर्क इन इंडिया। Thank you, ma'am. This is the last question, and I think you can sum it up in 1 or 2 words if that's possible. That you Right. have been a CS, a lawyer, and a civil servant. So, what do you think is the power of bureaucracy that sets it apart from all the other career options that are there to serve the nation? This I talked in my initial remarks only, that civil services gives us a diverse opportunity of serving to the people, of connecting to them, working in field at a very young age. 22, 23 years, 24 में अगर आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करते हैं, बिफोर यू टर्न 30 यू विल बी एक्चुअली अ डिप्टी कमिश्नर और अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उससे पहले आप एसडीएम तो 2 साल में 3 साल में ही लग जाओगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको किसी भी सर्विस प्रोफेशन में इंडिया में नहीं मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सेकेंडली, यू हैव दैट करिश्मा, यू हैव दैट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, यू गेट, अगर आप करना चाहो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। इफ़ यू हैव योर ट्रू इंटेंशन, you can actually do lot of things which will be benefiting people. Our friends, मुझे लगता है इस सर्विस का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक फीचर, सबसे यूनिक एडवांटेज यही है कि आप लोगों के साथ मिलके आप लोगों की लाइव्स में एक्चुअली चेंज ला सकते हो, विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट, and you can actually do a lot of good work when you are part of this service. So Sanil, I think these were the questions. So मैं बस लास्ट में एक या दो ही बात बोलना चाहूँगी, स्पेशली टू माय फीमेल कलीग्स, टू माय यंगर फीमेल कलीग्स जो आज इस सेशन में हैं या जो ये सेशन बाद में भी देखेंगे, कि अपने हौसलों पे आप विश्वास रखिए। फ्रेंड्स, इंडिया प्रीडोमिनेंटली हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल डोमिनेटेड सोसाइटी, और पेट्रियार्की बहुत सालों से हम देखते आए हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जिसमें हमें देखने को मिला कि विमेन आर बिकमिंग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर एजुकेशन, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वी हैव सीन इन रिसेंट टोक्यो ओलंपिक्स दैट हाउ विमेन, 3 इनिशियल ओलंपिक मेडलिस्ट वर विमेन, एंड अभी पैरालंपिक्स में भी हमारे जो इनिशियल फर्स्ट जो गोल्ड आया था अपनी लेखरा, शी पैरालंपियन, शी गॉट द गोल्ड। तो गिवन अ चांस, गिवन एन अपॉर्चुनिटी, विमेन कैन डू वंडर्स। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए, एंड ऑल्सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द मेल काउंटर पार्ट्स टू हेल्प, सपोर्ट एंड नर्चर देम, टू एनकरेज देम, क्योंकि आज भी कई जगह ऐसे हैं कि विमेन एंड गर्ल्स आर नॉट गेटिंग दैट एडिक्वेट सपोर्ट
और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, या उनका ओरिएंटेशन नहीं होता, या वो करना चाहती हैं तो उनको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, या आसपास में सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का, टीचर्स का, या उनके जो भी कलीग्स हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स students who are in Delhi University Hansraj College, they are of course at a level up than the other parts of the country, especially at the rural areas. But still, this notion always I have been speaking about this. And second most important thing I would like to just sum up ki whatever professions, whatever career you choose, society contribution and your contribution towards nation building, that is very important. आप जिस भी कैपेसिटी में रहें, जैसा सनिल ने मेरी इंट्रोडक्शन में भी कहा था, वी ऑल कैन ब्रिंग अ चेंज, स्मॉल और बिग, इन वॉट एवर कैपेसिटीज वी हैव. So that is the most important thing. So, and if we try, definitely we would be able to do at least something for somebody, for some people in the society. So believe in your dreams, and इफ़ यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको ये अचीव करना है, आप करके ही रहोगे. अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट इट इज़ your own willpower, it is your belief in your own self, your determination, your courage and your motivation which will help you in excelling in your life. और फ्रेंड्स, एक हिंदी का प्रोज है, मैं हमेशा कई सेमिनार्स में मैं उसको कहती हूँ, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, देयरफॉर आई जस्ट लाइक टू रीटरेट इट हियर कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान. तो तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, यू कीप ऑन मूविंग एंड कीप लीविंग योर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, and the entire world is watching you, the entire sky is watching you. So these were the remarks from myself. My best wishes to the entire team, and do excel in your life. I'm very much sure students, जो कि हमारा युवा शक्ति है, the powerhouse of our country, you all are the powerhouse of the country, and I'm very much sure that you all will excel in your life. Stay happy, stay healthy. It is also very important to stay healthy, stay happy. And my regards to the entire team, principal ma'am, all the professors, all the students. Thank you so much. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. I would now like to take a moment to express my vote of thanks on behalf of Nishtha Society to all those who have made this session a grand success. In the beginning, I would like to thank Sonal ma'am for being with us by taking her time out amidst of her busy schedule. Your address was truly inspirational for the student community of Hansraj College, University of Delhi. I wish also to record our sincere appreciation to our esteemed principal, Dr. Rama, and convener Mahendra Prajapati sir, who have always shown keen interest in associating themselves for the activities of the society. I also express my regards to our team and participants who chose to go live with us, always acting as a support system and energy booster to our society. Last but not the least, I express my gratitude once again to Sonal ma'am. It would indeed be a pleasure for us to listen from you in person as and when the situation improves. Our first session of Uddesha has hereby come to an end now. I thank you all for spending your valuable time here. Keep yourself updated, and for more queries and information, follow our social media. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye.